Hello and welcome to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक and in this episode I'll tell you do I like AR Rahman. पागल हो क्या? Of course I like AR Rahman. In this episode I'm just going to tell you some of my most favorite hidden, underrated, under the radar wale songs from AR Rahman that I absolutely love. Because it's the man's birthday on 6th January and AR Rahman is one of my favorite musicians, if not my favorite, like music director, singer, instrumentalist, mix engineer, everything. Because the guy is just so innovative. हम इस एपिसोड में बात करेंगे 5 ऐसे गाने बाय AR रहमान जो शायद तुमने ना सुने हो, और अगर तुमने नहीं सुने तो भाई उसको अब भी प्लेलिस्ट में डालो, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द मोस्ट वैकिएस्ट सॉन्ग्स दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम द मैन एंड दीज आर नॉट योर टिपिकल दिल से रे एंड छैया छैया, वो सब तो ग्रेट है ही, बट दीज आर सॉन्ग्स विच आई डिस्कवर्ड एंड व्हेन आई हर्ड देम द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक ब्रो ये दिस इज नथिंग लाइक द काइंड ऑफ म्यूजिक आई हैव हर्ड. So let's get started. On number 5, I have the song Keep the Hustle, which is AR Rahman featuring Wale. It was from the $1 Million Arm soundtrack. $1 Million Arm एक American movie थी. This is after Slumdog Millionaire, जब अमेरिका का हर एक डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहता था. So everybody like got him on board to do the music. तो ये अच्छी मूवी थी, ठीक ठाक मूवी थी, but like the soundtrack was really nice. What I really love about this song is the whole anthemic vibe. It's orchestral, it has classical elements, it has string sections and all, but it also has like very electronic stuff going on, EDM stuff going on. Another thing I really liked about this whole collaboration between Rahman and Wale was that the rapper didn't overpower it with like a very rapidy rap flow and lyrical miracle spiritual individual type vibe, because it wasn't the kind of a track. मतलब वो काफ़ी simplistic verse है उसका, but काफ़ी powerful है. It's a lot of chanting going on, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. So let's go to my pick number 4 for the most underrated track by Rahman, and my track number 4 is Balleilakka from the film Sivaji the Boss. This song एक तो it's damn musical, but it is not the first pick that comes to your mind when you think of great Rahman songs. Usually you think of very deep and classical song. This is एकदम mainstream मसाला, ढोलक वो drums बज रहे हैं and ढिक चिक हीरो नाच रहे हैं. रजनीकांत का गाना है शिवाजी द बॉस में, स्टार्टिंग में आता है when he is coming back from America. But what I really love about this song is the musical arrangement of this song, and testament to that is that it is one of Rahman's most covered song. Now for guys who don't know, cover का मतलब होता है कि तुमने एक गाना किया and then मैं उसी गाने का अपना एक वर्जन करूँगा, है ना. तो मतलब तुम अगर YouTube पे लिखोगे बल्लेलक्का रहमान acapella, a lot of German, American, Japanese, Chinese people, choirs and orchestras have done acapella versions of this track because there is so much going on. There is एक ऐसा छन पीछे से चल रहा है, drums चल रहे हैं, vocal की 3 layers चल रही हैं, and this just goes to show that the guy has so much attention to detail. So I've heard this about Rahman, that he pays extra attention to his background vocalist, and कई बार ऐसा हुआ है उसके साथ that the main singer is on point but background singer ने थोड़ा सा ऐसा harmony में इधर उधर कर दिया, so he had to retake the whole thing. So this song is like the example of कि ये बंदा कितना attention detail देता है, क्योंकि more than SP Balasubramaniam the lead singer, it's the background vocals that kill it for me. Okay, so my number 3 pick is the song Pray For Me Brother by Rahman and this rapper Blaze. एक फ़ोन आता था, तुम्हें याद होगा, नोकिया का N series के फ़ोन्स आते थे, उसके साथ एक एल्बम आई थी कनेक्शंस. ये गाना उसी का एक पार्ट था, एंड दिस सॉन्ग वाज मेड in collaboration with the United Nations as like an anti-poverty का anthem था, और ये बहुत ही ना मतलब soothing गाना है. And if you've heard enough of Rahman music, you know that he uses 2 instruments very, मतलब बहुत अच्छे तरह से यूज करता है 2 इंस्ट्रूमेंट्स, विच इज द गिटार एंड द स्ट्रिंग्स, सिंथ स्ट्रिंग्स जो होती हैं. एंड दिस सॉन्ग हैज लाइक अ नाइस ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ देम. इट स्टार्ट्स विद लाइक अ नाइस गिटार पीस एंड फिर वो बीच में स्ट्रिंग्स आती हैं और पूरा ऐसा choir आता है, Pray For Me Brother, and then there is an alap. So it's a nice blend of acoustic instruments and electronic instruments, and it's also a nice blend of Indian music and Western style of music, which दोनों का ही influence रहमान के music में हमें हमेशा दिखता है. And that's why he is so, you know, नया लगता है वो हर बार, because जो लोग
इंडियन म्यूजिक से फेमिलियर हैं, दे अप्रिशिएट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट कि अरे वाह कितना अच्छा ऑर्केस्ट्रेशन है, कितना अच्छा स्ट्रिंग सेक्शन है, वायलिन्स वगैरह हैं. और जो वेस्टर्न क्लासिकल समझते हैं दे आर लाइक कि अरे वाह कितना अच्छा तबला बज रहा है, कितना अच्छा आलाप है. तो वो मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी वाला लगता है मेरे को तो उसका काम, कि मतलब दोनों को खुश कर दो एंड तुम ऐसे बेस्ट म्यूजिशियन बन जाओ. नाउ लेट्स गो टू द नंबर 2 पिक. द सॉन्ग इज कॉल्ड मौला व सल्लिम फ्रॉम ओके कनमनी. Okay, hear me out. I think that AR Rahman makes some of the best religious and devotional music. और मतलब it is faith agnostic, किसी भी faith का हो. There is ख्वाजा मेरे ख्वाजा, there is ओ पालन हारे. He did अभी 99 songs में he did the song शिरडी साई बाबा वाला. All of these songs are so pure and they touch you at such a cerebral level कि वो फर्क नहीं पड़ता किस faith के लिए बनाया है या किस at that time religion and all of that doesn't matter, just the music is that good. But on this song, I think he has broken all bounds of devotion and submission to a higher power. The lyrics are in Arabic and I obviously didn't understand a word of it, but I remember each and every word. मतलब मेरे को pronunciation याद है words की, because I've heard the song so many times. It's so poetic. It's very soothing. और मतलब the words are like poetry. मतलब there is not a harsh sound, which is like an attribute of Arabic and hence Urdu. तो वो है, and to be honest, I feel like a tad bit uncomfortable playing this song out loud. Not because it's like a quote-unquote Islamic jihadi song, but because being a religious person myself, this song is the 3 minutes of my life where I actually pray to God, because I am like, bhai, AR Rahman is the only person who can convert and make me believe. And the song is sung by his son, and he has done such a great job. It's such a pure and unedited song, because बहुत सारी जगहों पे there is like a vocal cut and उसकी सांस आ रही है ऐसे, but he let all of those quote unquote imperfections stay in the song because it's bigger than just a song. It's like a इबादत है वो उसकी, वो गाना नहीं है सिर्फ. Now before we go for the number 1 pick, I have like a छोटा सा honorable mention. It's actually 4 songs, बहुत सारे songs हैं, पूरी album ही है यार, ले लो. So the song is, and the album is called SuperHeavy by this group called SuperHeavy. SuperHeavy is a group, it's like a band of sorts, which has AR Rahman, Mick Jagger, Joss Stone, Dave Stewart and Damian Marley. मतलब अपने अपने जॉनर के सबसे बेस्ट लोग हैं इस बैंड में. रेगे में डेमियन मार्ली, रॉक में मिक जैगर. एज फार एज आई नो, रहमान वुड हैव हैड द चार्ज ऑन सॉन्ग्स लाइक सत्यमेव जयते एंड माहिया, बिकॉज वो थोड़े इंडियन इन्फ्लुएंस के ज़्यादा थे. बट ऑब्वियसली सॉन्ग्स लाइक एनर्जी एंड मिरेकल वर्कर, सुपर हैवी, दे वर मोर लाइक वेस्टर्न रॉक रेगे, उस वाले इन्फ्लुएंसेस के. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू माई फेवरेट, it's actually one of my favorite Rahman songs, and it's a pity that it's not available for streaming anywhere. But if you haven't heard this song, bhai, find that song on YouTube and listen to it. The song is called Jiya se Jiya. This song is just nostalgia for me because मेरे पापा के पास N73 फ़ोन था और उसमें ये एल्बम प्रीलोडेड थी. It had Shivamani on the drums and Rahman on music, and ये भी anthemic type song है. And the song is basically about how we all are one, and वही typical ऐसा पॉपुलेशन सबको साथ में रहना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, फ्री हग्स मिल रहे हैं वीडियो में एंड ऑल ऑफ दैट. When you talk about just the music, it is a very powerful instrumentation because it has एक तरफ से these really huge, humongous African drums that Shivamani is playing, and then there are these horns which are like tribalistic zone में जा रहे. They weren't like very sophisticated classical horns जो एक ऑर्केस्ट्रा में बजते हैं. They were very rustic horns. और उसके ऊपर से रहमान की ऐसा हस्की सी वॉइस में वो बोल रहा है, न न न न न न जोड़ के पतंग एक दूसरे के संग जुड़ गया, जिया से जिया. काफ़ी मतलब जस्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग अलाउड इज गिविंग मी गूज बम्स. काफ़ी बढ़िया गाना. लाइक आई रियली लाइक दिस सॉन्ग एंड ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स एक्चुअली, एंड अ लॉट मोर जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता. बट या, दिस इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू सम अंडररेटेड हिडन जेम्स ऑफ AR रहमान. Let me know if you have heard any of these songs and what you think, and मुझे बताओ कि इनमें से कितने गाने तुम्हारी प्लेलिस्ट में जा रहे हैं. मेरी प्लेलिस्ट में तो भाई ये सारे गाने हैं एक्सेप्ट जिया से जिया, बिकॉज द सॉन्ग इज़ नॉट ऑन स्पॉटिफाई और एनीवेयर. बट मैं अभी भी यूट्यूब पे उसकी कोई ऐसा पायरेटेड टाइप वीडियो सुनता रहता हूँ. ऑल्सो आई डिड अ ईयर एंडर फॉर 2022, मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स ऑफ 2022, तो वो भी चेकआउट करना. एंड यप, दिस वॉज प्रतीक लिधु एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू, बाय बाय.
Do I Like It is a Quint original podcast executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted, produced and edited by Prateek Lidhu. It uses music from the albums $1 Million Arm, Sivaji the Boss, Connections, OK Kanmani and SuperHeavy. The theme music was from BMG Production Music. You were listening to the Quint's podcast.